हाय एवरीवन, नमस्ते सबको। मेरा नाम ऋषि है और आज हम डिबेट का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखने वाले हैं। टुडे वी आर लर्निंग एक रेफ्यूटेशन क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे रेफ्यूटेशन क्या होता है। रेफ्यूटेशन का मतलब होता है जब आप किसी और के आर्ग्यूमेंट को चैलेंज करते हो और एक्सप्लेन करते हो क्यों वो अपोनेंट क्यों गलत है। इन डिबेट सिर्फ अपना आर्ग्यूमेंट बनाना इनफ नहीं होता है, आपको अपोनेंट के आर्ग्यूमेंट्स को भी आंसर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है होमवर्क शुड बी बैन्ड और आप डिसएग्री करते हो, तो आप सिंपली ये नहीं बोल सकते आई डिसएग्री। आपको रेफ्यूटेशन करनी पड़ेगी। आज हम सीखेंगे रेफ्यूटेशन का सिंपल 3 स्टेप मेथड। तो पहले रीस्टेट द आर्ग्यूमेंट, दूसरा एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड थर्ड गिव योर रिस्पॉन्स। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। पहला, आप अपोनेंट का आर्ग्यूमेंट शॉर्ट फॉर्म में रिपीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई अपोनेंट सेज होमवर्क शुड बी बैन्ड। हिंदी में मेरा अपोनेंट कह रहा है कि होमवर्क बैन होना चाहिए। इस स्टेप का पर्पस है क्लैरिटी। इसी जज और ऑडियंस को पता चलता है आप किस आर्ग्यूमेंट को आंसर कर रहे हो। Step 2, explain the problem. अब आप एक्सप्लेन करते हैं क्यों आर्ग्यूमेंट वीक है। For example, this argument is incorrect because homework helps students practice what they learned in class. हिंदी में ये आर्ग्यूमेंट वीक है क्योंकि होमवर्क स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। Step 3, give your response. अब आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हो। For example, instead of banning homework, schools should give smaller but more meaningful assignments. और हिंदी में होमवर्क को बैन करना है क्योंकि schools और useful assignments देने चाहिए है। तो full refutation example, चलिए steps को एक साथ देखते हैं। My opponent says homework should be banned. However, this argument is incorrect because homework helps students practice important skills. Instead of banning homework, schools should focus on giving shorter, more meaningful assignments. देखा? Clear, organized, powerful. इसी को कहते हैं strong refutation. अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट दूंगा और आपको उसको रिफ्यूट करना है। आपको यूज करना है पहला restate, दूसरा explain और तीसरा respond. Ready? Practice number 1. School uniforms should be required. Think about it. Pause करके सोचिए। अगर आप disagree करते हो तो refutation क्या होगी? Example refutation है my opponent feels school uniforms should be required. However, this argument ignores that uniforms limit students' ability to express themselves. Instead, schools should allow to wear appropriate clothing while still maintaining dress codes. आप क्या सोचते हैं? Should KLF schools have uniforms? Practice number 2. Students should not have recess. थोड़ा सा सोचिए। Recess क्यों important हो सकता है? Pause the video here. An example refutation could be, my opponent says students should not have recess. However, this argument is weak because recess helps students relax and improve their focus in class. So instead of removing recess, schools should ensure students have enough time to play and recharge. अब आप ट्राई करिए है। आर्ग्यूमेंट है फोन्स नहीं होते चाहिए स्कूल में। मैं चाहता हूं कि कोई वॉलंटियर अपनी रेफ्यूटेशन शेयर करे, या अगर आप ग्रुप में हो तो अपने पार्टनर के साथ 1 मिनट डिस्कस करो। याद रखो, स्टेप 1, restate. Step 2, explain the problem. And step 3, response दे दो। I'm going to pause the video here and you guys can practice this. Great job. अब एक pro tip. Strong debaters सिर्फ disagree नहीं करते हैं, वो specific reasons देते हैं। एक weak refutation है I disagree with my opponent.
लेकिन एक strong refutation है, my opponent says phones should be banned in schools. However, this argument ignores that phones can be used for educational research and emergencies. So instead of banning phones completely, schools should create rules for responsible use. Dekha difference? Specific reasoning means एक stronger debate होता है. चलिए एक fast game खेलते हैं. मैं एक argument बोलूंगा और आपको quick refutation सोचनी है. Ready? Argument 1. School सिर्फ 3 घंटे होता है. Argument 2. All homework should be eliminated. For argument 3, students को सिर्फ math or science पढ़ना है. Now try answering this using the 3-step method. Pause the video here and go ahead. चल, आज हमने सीखा है refutation क्या होता है और किसी यूज करते में 3 steps simple में. पहला restate, दूसरा explain the problem और तीसरा give your response. अगर आप डिबेट में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स मत बनाओ, रेफ्यूटेशंस भी स्ट्रांग बनाओ. प्रैक्टिस करते रहो और आप अमेजिंग डिबेटर्स बन जाओगे. शुक्रिया सबको. Thank you everyone for participating today, and we'll see you in the next SpeakUp Scholars lesson. Thank you.